Everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to discuss about the part 3 of tongue anatomy, that is nerve supply, arterial supply and the lymphatic drainage of the tongue. Okay, so first we are going to discuss the nerve supply. So we have two nerves here. Okay, first is the motor nerve and the sensory nerve. Motor nerve is very easy to remember, that is all the muscles, either it is intrinsic or extrinsic, all the muscles of the tongue is supplied by hypoglossal nerve, that is the 12th cranial nerve, except palatoglossus. Palatoglossus is supplied by the cranial root of the accessory nerve through the pharyngeal plexus. Okay, so this you have to remember, that all the muscles of the tongue is supplied by hypoglossal nerve except palatoglossus. Okay, now coming to the sensory nerve supply. In sensory nerve supply, first we will see the parts. Okay, anterior 2/3, posterior 2/3, anterior 2/3, posterior 1/3 and the posterior most part. Okay, so सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इनका सिचुएशन, इनका पोजीशन, लोकेशन और फंक्शन क्या है. सो एंटीरियर हमारा कहाँ पर होता है? इट इज लाइज इन द ओरल कैविटी, in the mouth, floor of the mouth. Then posterior, we have posterior and posterior most both are in the oropharynx. Okay, then the main chewing function is of anterior 2/3, whereas posterior 1/3 and posterior most का part का जो function है it's deglutition. Okay, now coming to the sensory nerve supply. In the sensory nerve supply we have for anterior 2/3 that means for the papillary part. Okay, जहाँ पे papilla सारे present होते हैं, that is your anterior tongue. Okay, so it is supplied by sensory nerve की बात करें तो it is supplied by the lingual nerve, which is the post traumatic branch of the first pharyngeal arch. Okay, then we have the posterior 1/3, that is your pharyngeal part of the tongue. Okay, it is supplied by the glossopharyngeal nerve. Okay, then we have the posterior most, it is supplied by the internal jugular of the vagus nerve. Okay, so सबसे पहले अपने को क्या क्या चीज़ याद रखनी है कि सेंसरी नर्व्स में लिंगुअल, ग्लॉसोफेरेंजियल, इंटरनल जुगुलर ऑफ द vagus nerve. Okay, so anterior 2/3 is supplied by lingual, posterior 1/3 is supplied by glossopharyngeal and the posterior most is supplied by internal jugular of vagus nerve. ये याद रखना है. Now coming to the taste sensation. Taste sensation किसकी कौन सी nerve के थ्रू आएगा? So the taste sensation in anterior 2/3 are due to chorda tympani except the circumvallate papilla. Circumvallate papilla और valate papilla जो होते हैं वो anterior 2/3 में टेस्ट सेंसेशन नहीं देते हैं. दे गिव टेस्ट सेंसेशन इन दी पोस्टीरियर 1/3 and the posterior most part of the tongue. Okay, so glossopharyngeal including valate and again here glossopharyngeal including valate. Okay, coming to the it is the internal jugular of vagus including valate. Okay, now coming to the development of epithelium from the endoderm. Okay, so first we see there are in anterior 2/3 we have two lingual swelling. ठीक है, two lingual swellings of the first arch. फर्स्ट आर्च में हम दो swelling देखने को मिलती है. बेसिकली दो swelling देखने को मिलती है. फर्स्ट swelling होती है lingual swelling of the first arch which is supplied by the lingual nerve. Then second we have chorda tympani of the second arch and third we have tuberculum impar which soon disappear. Okay, so बहुत बार ये क्वेश्चन tuberculum impar पर आया है कि ये आपको कहाँ देखने को मिलता है. ठीक है, नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है. यू कैन चेक इट इन डेंटल पल्स. ओके, सो क्यों ये पार्ट? क्योंकि इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते. हमें ये दो स्वेलिंग याद रहती हैं. ठीक है, लिंगुअल एंड द कॉर्डा टिम्पनी और फर्स्ट एंड द सेकेंड ब्रांच रिस्पेक्टिवली. बट वी फॉरगेट द ट्यूबरक्युलम इम्पार, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ क्वेश्चन पार्ट ऑफ नीट. ओके, देन कमिंग टू द posterior 1/3. In posterior 1/3 we have third arch from large ventral part of the hypobrachial eminence. Then we have the fourth arch for the posterior most part. A fourth arch forms the small dorsal part of the hypobrachial eminence. So both are formed by the hypobrachial eminence. The main difference is posterior 1/3 is third arch which form the large ventral part, whereas the posterior most is of fourth arch which form the small dorsal part. Okay,
So this is very very important, you have to remember this. Okay, now coming to the arterial supply. So arterial supply, basically it is supplied by the lingual artery, which is the branch of external carotid artery. Okay, so the arterial supply of the tongue is the lingual artery, which is the branch of external carotid artery. Okay, coming to the lymphatic drainage. So lymphatic drainage, ये जो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, these are the questions of the नीट. ओके, इस तरह से भी पूछ लेते हैं. सो इन अ बुक वी हैव रिटन लाइक दिस दैट टिप जो है, इट इज़ जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, टिप पर इट इज़ बायलैटरली बाय द सबमेंटल नोड्स. एंटीरियर टू थर्ड में इट इज़ यूनिलैटरली बाय द सबमैंडिबुलर नोड्स एंड बायलैटरली टू डीप सर्वाइकल fascia. And the posterior one third and the posterior most part is by the bilaterally into the upper deep cervical lymph nodes, including the jugulodigastric nodes. Okay, so bilateral, uni, bilateral and bilateral. So tip bilaterally by submental nodes, anterior two third unilaterally by submandibular nodes and bilaterally by deep cervical fascia. deep cervical fascia से ये याद रखना कि upper deep cervical lymph nodes किसको lymph drainage होता है इसका, it is in posterior one third and the posterior most part. Okay, including jugulodigastric nodes. Okay, so this is it. And also ये जो मैंने पेंसिल से लिखा है, most of the time questions arise from these एंड कन्फ्यूज हो जाते हैं अपन. ठीक है, तो टिप इज़ कॉल्ड दी अपाइकल वेसल. ओके, देन एंटीरियर टू थर्ड इफ इट इज़ supplied by submandibular nodes, it is called marginal vessel. If it is supplied by the deep cervical fascia, it is known as the central portion or the central vessels. Okay, then we have the posterior one third, that is your basal and the dorsal vessels. Okay, so इसको हम क्या कैसे नाम दे रहे हैं, टिप जो है बिल्कुल सबसे आगे होती है आपकी, है ना, तो इट इज़ apical. ठीक है, marginal और central position is your anterior two third and the posterior most part is your base. Okay, so that's why it is called the basal or the dorsal vessels. Now all these three combine and the whole lymph is finally drained into jugulo-omohyoid node, which is called the, आगे जाके इसको हम क्या कहते हैं, lymph nodes of the tongue. Okay, so this is all about the lymphatic drainage, arterial supply and the nerve supply of the tongue. Now coming to the histology of the tongue. Yes, we are also going to cover the histology of the tongue in this session only. Okay, now histology. In histology, the main bulk of the tongue is due to the striate muscles. Okay, you have to remember this. Then we have mucous membrane, which is covered by the connective tissue, which is called the corium. Okay, which is lined by the stratified squamous epithelium. So this is your question part. This is your question part. Okay, then the oral part is thin. Okay, pharyngeal part is rich in lymphoid follicles, जो हम last lectures में पढ़ चुके हैं already. Then we have the inferior surface, which is again smooth and thin. Then we have taste buds. Now this part is very very important. Okay, टेस्ट बड्स इज़ मोस्ट ह्यूमरस. ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ मोस्ट न्यूमरस एंड इसमें क्या होता है दैट द नंबर इज़ इंक्रीज्ड इन अ वैलेट साइड एंड द वॉल ऑफ द सराउंडिंग न्यूक्लियर. तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्ट बड्स सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं. सो इट इज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वैलेट साइड पे एंड द वॉल ऑफ द सराउंडिंग न्यूक्लाइज. ठीक है, देन न्यूमरस यानी कि इससे कम कहाँ पे, फोलिएट एंड द पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट में. देन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड की अगर हम बात करें टेस्ट बड्स की, तो फंजीफॉर्म, सॉफ्ट पैलेट, एपिग्लॉटिस एंड द फेरिक्स यहाँ पर स्पार्सली होते हैं, स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. नाउ कमिंग टू दी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट, दैट इज़ कहाँ पे टेस्ट बड्स पाए ही नहीं जाते हैं. सो मिड डॉर्सल एरिया और मिड डॉर्सल रीजन में वी डोंट हैव एनी टेस्ट बड्स. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर. Now coming to the pathway of the taste sensation or the taste buds. Okay, now if we talk about the pathway, so सबसे पहले taste sensation आपकी नाइन्थ cranial nerve से होते हुए inferior ganglion से होते हुए ट्रैक्टस सॉलिटेरियस के पास जाता है, एट सॉलिटेरियो थैलेमिक ट्रैक्ट से होते हुए थैलेमस में जाता है एंड देन इट गोज टू दी पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस. ओके, आई पुट द picture also so that you can understand it. So this is all about the
supplies, nerve supply, arterial supply, lymphatic drainage, histology, and the pathway of the taste buds. So this is all about it. Thank you so much for watching this video, and I hope this video helps you in your academics, and if it does, then I would be really grateful. Also, the notes of these of this lecture or these notes are available in the description box. You can click on the drive link and you can simply download that notes, so that you can comfortably read those notes without wasting your time in making your own notes. Okay, but I will prefer if you make your own notes, then it would be really good, because जब हम अपने notes लिखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. So yeah, this is all about it. Thank you so much. I'll see you in the next video. Till then, don't forget to subscribe the channel.